it is like this, that this building you see, this is all the academic block. Up to this place is the academic block. And on the ground floor are all the nursery classes. On the first floor where we are now standing is the Patiala School for the Blind. And on the third and the fourth floor is Patiala School for the Deaf. So that is how we have made our setup. And as far as the hostel is concerned, this is the boys' hostel building which has come up with the dining hall, with the kitchen and everything. And we have a very big basement. Yes, huge basement we have got for our central functions and all. And the girls' hostel is now under construction. It will be completed by April. Hello, Arian. Good afternoon. क्या हो रहा है? हैं? क्या खेल रहे हैं? पानी खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हो? बर्फ पानी। बर्फ पानी। कैसे खेलते हैं बर्फ पानी मेरे को बतलाओ। These are the blind children. फर्स्ट में आ गया था। Well, these children, we call them disabled, we call them handicapped, we call them Viklang, we call them Divyang, and by so many names. They are specially able children and not disabled children. They have got more number of qualities. They have got a better judgment than a normal person. I think that these children are more capable. Well, I am Colonel Karaminder. I was born and brought up in Patiala. From my young days, I had a dream that I should become a Captain Saab. So I don't know how it came to my mind, but every time my father, mother, they asked me, what are you going to be? So I was to tell them that I want to become a Captain Saab. I joined the Sikh regiment. I was commissioned as an officer in the Indian Army. And in the Sikh regiment, I joined 3rd Battalion, the Sikh Regiment, 3 Sikh as it is normally known, where I served for about 27 years. Namaste ji, aao ji, welcome ji. Aao. नहीं ये नवा बने जी पूरा जी ये जरा ये ब्लॉक है ये भी पूरा नवा बने जी ये साढ़े क्लासरूम बने ने एडिशनल क्लासरूम ताकि ਅਸੀਂ अपना होर बच्चे ਇੱਥੇ ਲੈ ਸਕੀਏ और ये साडा पूरे ਦਾ पूरा ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਡਾ बॉयज़ होस्टल है हाँ जी बॉयज़ होस्टल बने हेठा साडा डाइनिंग हॉल बने उधर किचन बने ये साडा गर्ल्स ਦਾ होस्टल बन रहा है और वैसे हले क्योंकि गर्ल्स ਦਾ ਹੋਸਟਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ गर्ल्स ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਸੀਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਘਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਨੈਚੁਰਲ 3 ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੀ ਹਾਂਜੀ 3 ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਚ ਗਏ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਆਹ ਬੱਚੇ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਇਹ ਨੇਤਰਹੀਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ 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 ਉਹ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੇਤਰਹੀਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖੇਲਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਇਹ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੈਸੇ ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਾਸ 12 ਤੱਕ ਨੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ, ਨਾ ਲਿਖਾਈ ਦਾ, ਨਾ ਹੋਸਟਲ ਦਾ, ਨਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦਾ, ਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਦਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਈਏ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਔਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੇ। हाँ जी मैडम जी, गुड मॉर्निंग। ये साढ़े प्रिंसिपल मैडम ने जी। हाँ जी, कितने गुमो खाना लेके आई। कल बच्चे आ गए वापस उतों? हाँ जी आ गए सी, राती आ गए सी। कहते बहुत सवेरे फोन आया से उन्होंने। अच्छा। हाँ, कहते कि तुहाडे बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत शानदार सी। करमिंदर सिंह जी की टीम है, श्रीमती रेनू सिंगला प्रिंसीपल पटियाला स्कूल फॉर डेफ ते प्रिंसीपल पटियाला स्कूल फॉर ब्लाइंड इन्हां दा स्वागत किया जावे ते इन्हां दा जैसे ये है पूरा खाली है, हम इसको दम करना है, गोल गोल गेम है। तो इसको पता कैसे होगा जी? कोई ब्लाइंड होगा आराम से यूं फेंक दिया ना, कोई भी ब्लाइंड होगा इसको आराम से इसके सामने सुन के यूं फेंक। देखिए जितना काम करेगी जितना यार कोई ट्रैक पे लग रहा तो यूं देखेंगे तो भाई इसका जितना फेंकेंगे उतना ही चलता रहेगा। मैं बता देता हूँ आपको साहब। हाँ। ये हमारी ब्रेन लीडो और इसमें मतलब आपको पता ही है ये है हमारा डाइस का, और ये मतलब जितने डॉट आएंगे यहाँ पर उतने पर ये चलेगा। 5 1 2 3 4 5 ये देखिए ना, ठीक है। आप खड़ी हैं तो ये वाइब्रेट नहीं करेगी, और अगर मैं इसे 2 मीटर पे करूँगा, 2 मीटर पे दूरी पर अगर कोई आएगा तो उसके लिए वाइब्रेटिंग करेगी। ये इसको लाइन के उसके साथ आपका In 2014 we were given the best NGO of the Punjab State Award. In 2015 we were honored by the President of India, where he declared this school as the best NGO in the child care sector. So I think that is no mean achievement. I think that is the highest achievement which any institution can hope for, getting the President's Award. In the government circle, the left hand doesn't know what the right hand is doing. So I think it is basically that. And I have been putting up this application for a grant for the last about 20 years. And it was only in the year 2016 that I got a grant of rupees 1,17,457 rupees
against my budget of 1 crore and 11 lakh rupees. So that was the gap. Financially, we depend upon the Uparwala, on the Paramatma or Almighty, whosoever you may call it, and He helps us with all the charity and donation, because these schools run totally on charity and donation. Till today, we don't charge any fees from any child. They are totally free of cost. Each and everything is free of cost. Children come to this school only with a small handbag, and remaining all their requirements, daily requirements, their other needs, their uniforms, their books, stationery, their daily needs, they're all looked after by the society. And our reputation, the credibility and reputation is very high. Till about last year, the government never used to give us any supply of books, and all our children used to be without the books. So then we imported a braille printing press from USA, and now as on today, all the children have got all the printed books in braille. Right from nursery, pre-nursery class till class 12, all the books in braille are available with the house. Water heating plant. It is a 10,000 liter capacity plant. It gives the children 24 hours hot water at 60 degrees centigrade. What we do that we have got a central washing machine, and all the clothes of all the junior children, they are all collected centrally, and we wash them centrally, press them, and then give them to the children. The senior children, they do the washing on their own. So today being Sunday is the washing day, so that is why you see all the clothes everywhere. We give them a very wide range of education. We don't inhibit them for anything. And education is only one small part. Otherwise, developing their personality is also an equally important job of ours. So we lay a lot of stress on them, and we give them all opportunities to visit the places, to this railway station which is close by to our school. And that railway station, they learnt all the things which even probably the normal children are not aware of. So similarly, we organize their visits to the post office. We organize their post to the banks, to the hospitals, to every public place, to learn by seeing. And we make them participate in all sorts of competitions, inter-school competitions, government competitions, painting competitions, singing competitions, sports, cultural, everywhere. Sumit Kumar, he won a bronze medal in wrestling in the Deaf Olympics in Turkey, and Gursimran Sidhu, he represented India in high jump, and he also won a bronze medal. And at the national level too, our students, they bag number of medals every year, and we train them and we make them participate in those games, and our children are doing very well for that. The idea of foundation of these schools, it was a brainwave of my father. My father, late Karaminder Singh, he was a very well-known philanthropist of Patiala. He devoted all his life to the social causes, to the community service projects. It was on one fine
lucky morning that he was going for his morning walk, and he find two blind children sitting on the roadside. He stopped after having a look at them and asked them why were they sitting there. They told them that they have come from nearby village and they are planning to get accommodation or to join a school for education in Patiala. But for the last 3 to 4 days, they have been running down and had not been able to find any accommodation or a school to get admission. My father, he forgot about the walk and he took them to the house and told them to rest and told them that till the time some alternative arrangements are made, they will continue to stay there. That is how these schools started, and the idea started building up in his mind. He looked around in Patiala and neighboring towns for a school for the blind children with hostel facilities, but it was not to be found anywhere. He thus decided that he will open his own school for the blind children with these two students as the first students of the school. And incidentally, these two students for whom the school was opened, they are even today with us. When I was posted in Bhopal, my father, he started asking me that these schools which he had started, the deaf and blind schools, that he is getting old and he is not able to now look after the schools properly. And he also had so many other innumerable social and community service projects which he was all alone managing, and he was trying to be their patron. ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਦੇਖੋ ਵੀ ਨਵਾ ਦਈਏ ਸਾਂਝੇ ਹੋ ਕੇ ਲੈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ When I was in the army, I was a full colonel, and he started telling me that, beta, now is the time for you to quit the army and come and help me out in my work, especially with the schools and all. It took me more than 1 year to decide what I should do. On one side was a very lucrative army career, and on the other side was the request from my father. And ultimately, what prevailed was that I decided that I must quit the army, take premature retirement, and go and help my father in all his social and other activities. So that is how I came to the schools and started working with them. I would say it was not mine and my better half, my wife's. We both decided that yes, I think it is time to go. And I think that was the best decision of my life. ਮਰੀ ਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਭੁੱਲਣਾ ਨੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸੀ ਪਿਆਰ ਲਿਆ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜੋ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਸਤਿਕਾਰ ਲਿਆ ਮਰੀ ਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਭੁੱਲਣਾ ਨੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸੀ ਪਿਆਰ ਲਿਆ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜੋ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਸਤਿਕਾਰ ਲਿਆ प्यार तेरे दी पींग छूटनी डिगी
10 11 नहीं उठाऊंगा तो सोने दो कोई बात। कोई नहीं, शकल दिखा देते हैं। सूट अपने आप पहनेगा, जल्दी हो जाता है ना। खाना खाना भी थोड़ा हिंट देना पड़ता है, स्लोली हीटिंग देना पड़ता है, क्योंकि हैंड पे प्रेस करना पड़ता है। अभी नींद से है ना। साइकिलिंग भी करता है। और थोड़ा मैं हाथ तो ऊपर करूंगा, ये खड़ा हो जाएगा। अच्छा। अब मैं नीचे करूंगा, ये बैठ जाएगा। अच्छा। अब मैं छोड़ दूंगा। अगर दिखाई देता होता तो बोल देता, बस सुनाई देता होता वो बोल लेता। दोनों में कोई भी काम नहीं कर रहा, बिल्कुल भी। बस ये बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, लेकिन जान तो है, हमारे जैसे इंसानी तो है। खाना रोटी है, इसको चुबाना नहीं मालूम। तो चुबाने के लिए हमें कम से कम 3 साल 4 साल लगेगा हमको इसको खाना सिखाने के लिए। तो जिससे इसको टीचिंग नहीं आता है, तो टीचिंग नहीं आता, जैसे हम टीथर होता है, वाइब्रेटर ब्रश होता है, ये सब यूज करेंगे, कड़ी मेहनत लगेगा इसमें। तो धीरे धीरे जैसे हम उसको बनाना देंगे, बनाना काट के अगर अंदर भी चला जाएगा कोई नुकसान नहीं है शरीर में। एप्पल नहीं दे सकते हैं, काजू नहीं दे सकते हैं। हम ऐसे बच्चे 6 साल में एक काम सीखेंगे। तो उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको 3-4 साल में अपने काम जैसे कपड़े पहनना, बाथरूम जाना, ऊपर से नीचे तक अकेला आ जाता है। वो जो ग्रिल है, आप जो आए जिस सिटी से, जो लेवल वाला ग्रिल है, आप इसको टच कर दीजिए, उसको पकड़ पकड़ के वो आ जाएगा। एक और है, वो अलग रूम में रहता है, उसका नाम एनी है, वो एक अपने आप सब कुछ करता है। केरला की है, केरला की है। तो एनी टीचर है यहाँ पे। वो सैलरी लेते हैं 9-10 हज़ार कोई कह नहीं सकता कि वो ब्लाइंड है या डेफ है। वो पहले बिल्कुल ऐसे बिहेव करता है जैसे डेफ है, उनके साथ साइंस से बात कर लेता है, पूरे ही सबसे बात करेगा। टच फोन है वो भी चलाता है, वो व्हाट्सएप फेसबुक सब चलाता है। केरला तक वो खुद यहाँ से बिठा देते हैं, केरला तक जाता है। एक वो शादीशुदा है, मेरे एक लड़का है, एक लड़की है, वो भी साइटेड है। अपने आप को जब ये अपने आप को हिट करता था, ये देखिए, ये एयर जो है ना, ये ब्लॉक हो गया, ये अपने आप को ठा अपने जैसे दिवाली आ गया। और ये देखिए अपने आप को बहुत मारता था, बहुत हिट करता था। तो इसको कुछ खाने में परिवर्तन है इस बच्चे के। इन बच्चे के लिए मीठा बिल्कुल बंद है, मीठा इनके लिए जहर के बराबर है। क्या नाम क्या है इनका पूरा? ये शिवम भाटिया, हम जीरकपुर। ये देखिए, ये साइकिल कर रहा है। पहले पैर चलाना आता नहीं था, अब पूरा। ये सिखाने में कितना समय लगा? मेरे को 9 महीने लग गए इसको साइकिल चलाना सीखने। तो पसंद है? हाँ, दोनों का ही अभी डबल साइकिल मैंने आपको दिखाया हूँ। आगे वाले सीट में मैं रहता हूँ, स्टेयरिंग मैं पकड़ता हूँ, कहाँ खड्डा है, कहाँ ब्रेक लगाना है, कहीं गाड़ी आ रहा है, मोड़ घुमाना है, तो ये सब मैं देखता हूँ। बैक साइड पीछे वाले सीट में ये बैठता है। बैठने के बाद हम दोनों का वजन ये खुद पेडलिंग करके चल रहा है। आगे मैं कंट्रोल करता हूँ, कहाँ ब्रेक लगाना है, कहाँ खड्डा है, कहाँ मोड़ना है, ये मैं कंट्रोल करता हूँ। इसको दिखाई नहीं देता। हाँ, हम पटियाला से बहादुरगढ़ तक नेशनल हाईवे में चलाते हैं। अरे वाह। साइकिल टच करते ही वो बैठ जाएगा, कैसे बैठते हैं, कहाँ से बैठते हैं, इसको ये सेंस है, दिखाई नहीं देता लेकिन वो सेंस है कि मुझे बैठना है साइकिल में। अगर ये लड़का हमें 5-6 साल से मिलता, आज तक और डेवलप करता है ये लड़का। ये हमें मिला है कम से कम 22-23 साल में मिला है। पूड़ी सीढ़ी जैसे, फिर ऊपर भी एक सीढ़ी जैसे एक प्ले था हमारे स्कूल में, तो मैं इधर चढ़ा देता हूँ, सीढ़ी जैसे चढ़ के ऊपर बैठ जाता है, बिल्कुल बंदर जैसे बैठ जाता है। मैं नीचे रह के इसको हिलाता हूँ बहुत जोर से। इसको ये सेंस है कि मैं गिर जाऊंगा, मैं ऊंचाई पे बैठा हूँ। हाँ, अभी हमारा जो प्लेग्राउंड है अभी थोड़ा ठीक नहीं है। बारिश हो गई थी। हाँ,
और सामान भी हमारा थोड़ा बिखरा पड़ा है। हाँ। ये बिल्डिंग बन रहा था, हाँ हाँ इसीलिए पैड टच कर दूंगा, ये अपने आप सो जाएगा। उतार देगा। ये सब आपने सिखाया? रजाई ओढ़ लेगा। अब उसको कैसे ओढ़ना है ये मालूम है। पूरी तरह से ढक लेगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तोड़ने वो ना इसके ना वो ऊपर कपड़े गिर गए थे, छोटे बच्चों ने घेर दिया उठा उठा के, तो ये उसे बोला था उतार दे डंडे के साथ, ये खुद ही चढ़ गया। पूरे बा Well, my sole motive in life is that these children should get the best type of education to lift them morally, psychologically, and in all the other ways and means, and to make sure that they get well settled in life. We give them an overall picture of education. Education, as it is well known, is not only books education, but it is far more than that. And that is what we are striving to achieve. And in this school, each and every child is a talented child. Each and every child has got special abilities and special capabilities which we try and develop on. And it is these qualities of life which we inculcated them which make them successful in life. And I am proud to tell you that most of our children who have done their, especially from the blind school, who have done their plus 2 from here, they have done their BA, they have done their MA, and some of the students are even pursuing PhD. And they are all well settled in life. Some of them are in good government jobs, others are in the banking sector, some are in the retail sector, in the civil sector. So we do help the children to lead a normal life even after leaving the school and to settle down in life. End of next year, the strength of the schools will be 450 children. It will be a quantum jump from the present 325 children we have, and I'll be having the residential accommodation for the children to cater up to 330 children. With this strength, I think it will be the biggest special residential education school in India, if not in Asia. So I am striving for that this school should prosper and be one of the biggest institutions in India, giving the best quality of education. ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ, ਭੰਗੜਾ 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 ਭੰਗੜਾ। ये मतलब एक म्यूजिक का है, लेकिन इन्हें पहले कराया था, तो उसे यही याद होगा तो उसी से कर रहा है। These are my glorious time, my glorious days
of my association with the school. It gave me so much of love, so much of pleasure, so much of satisfaction, so much of mental awareness, and brings me closer to these heart of the children, and that is what I really earn for.